Hi everyone, very good evening, good afternoon. Ashish Kyal here, and very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. Before I start, I would like to just ensure that you are doing fantastic, and आप सभी को दीपावली की धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. And it is pleasure to be speaking here with every one of you. Very good afternoon to everyone. And धनतेरस का दिन है, बहुत ही पावन दिन है, और आज के दिन दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ. रचिता इज सेइंग दैट क्याल द मैजिशियन. थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर आपने आज का ट्वीट देखा होगा मेरा, एंड दैट वुड हैव बीन द की फैक्टर व्हिच वुड हैव रिजल्टेड इनटू सेइंग दैट द मैजिशियन. दो चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, उसके बारे में मैं बात करूंगा. पहले आगे बढ़ने के पहले लेट मी आस्क यू ऑल, हाउ आर यू डूइंग? Are you doing fantastic on this festival when you are spending your time you should spend your time with family, enjoy your day, enjoy the markets, have fun, become more joyful. It's very important, and I can see so many of you are doing well and doing fantastic. Great to know that. Rachit, Nagesh, Ajay Kumar, great to see you. Ayushi, great to see you also here on the Zoom platform. And people who are there on the YouTube platform, you can join me on the Zoom, because यहाँ पर थोड़ा सा interaction better होता है. And that's why I am asking you to join me on the Zoom platform so that you are able to see me, speak with me, and यहाँ से मैं interact थोड़ा better कर पाता हूँ. So आज पहले तो चलते हैं, एक खुशखबरी आपको सुनानी है मुझे, जो आज के दिन वापस से I have won the खिलाड़ी नंबर 1 show, which you might have been seeing. If you did not, I'll just share across my screen with the gains that I am able to make again this week. So let me very quickly share that across all of you. And यहाँ पर okay, are you able to see this? I have won again this week. It was a fantastic competition, and ये मेरे ख्याल से करीबन more than 24-25 times that I have won on खिलाड़ी नंबर 1 show, and I thought I will share it across with you all. Last दिवाली धनतेरस के वक्त एक और ये कॉन्टेस्ट हुआ था, जहां तक मुझे याद है. I have again won that show, and that is what I can definitely share across कि यार जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, this is not for me. This is for every one of you who actually believes into that factor of time and the factor of Elliott wave, Neo wave. This is for every single one of you, to make you believe if it works for me, it will work for you. And dosto, Romy, thank you very much for the kind words. The stock selection is from the algos, is from the scanner, and the mentees might know how it's done, because हमने मेंटरशिप में किया भी है, किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, कैसे वो स्टॉक्स देखा जाता है, वो सारी चीजें. तो ये है आपके सामने जो खिलाड़ी नंबर 1 पे जीतने के लिए, और ये है हमारा दी ओवरऑल खिलाड़ी नंबर 1 अगेन फॉर द वीक. एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक, बिकॉज स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, एंड I thought I'll just share across with every one of you. So this is what I wanted to share across as and दोस्तों, एक और चीज, इसका पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता. इसका क्रेडिट मेरी टीम को भी जाता है, इसका क्रेडिट आप लोगों को भी जाता है, because without your wishes, without your blessings, something like this is not possible. Without my team, something like this is not possible. So it is everyone's effort that is being reflected, and it is a proof of science, of time and wave theory, which actually works in the market. And that is the proof that I wanted to share across first thing as a on this धनतेरस. अभी दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में, वो है बहुत क्लियरली ट्विटर के ऊपर क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो. My colleague will share the Twitter link also with all of you. Are you following me on Twitter? I want to share that across the levels that was given in the morning on Twitter. Do you remember the level which I gave today morning? Let me show it across to you. If you do not remember that levels, let me share it across very quickly. And gift nifty यहाँ पर है
आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लेवल्स देख पा रहे हैं. I'll also share across very quickly. These are very interesting things that are happening across, and I'm sure कि आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा ये लेवल्स देख के. इट इज लाइक मैजिक, एंड इट इज नॉट ओनली 19,330 का लेवल. ओके, ये एक लेवल नहीं है 19,330 का दोस्तों. यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स की बात हो रही है. कौन से मल्टीपल लेवल्स है? इफ यू लुक एट इट, the first level that you see on the chart here, the first level that you are seeing on the chart here is 19,330. That is the level that you see here. Let me just very quickly share that across. यहाँ पर निफ्टी का लो, गिफ्ट निफ्टी was down by 100 points. Still, निफ्टी did not break that 19,330. निफ्टी का लो बना 19,229.45. That is the level that is being that has worked. Clear है? दूसरा लेवल था 19,391. The Gann level 19,391 था. That was the second level. The third level, which is the Gann level, the third level was 19,450. Okay, 19,450. Now these are the three levels that I have tweeted across. You know Nifty का हाई कितना बना क्लोजिंग के वक्त? Do you know that what is the high of Nifty that it touched during the closing time? Can you tell me the high that Nifty touched during the closing time? Can anyone tell me कितना हाई बना है? Everyone, the high that Nifty touched is 19,451. Can I say it's magic of numbers? Okay, do you agree with me? Is it a magic? So दोस्तों, what I am trying to share across is something not less than a magic. The magic of numbers, and it is not once. It is not once. If you are following me, ये वापस से हुआ था करीबन 4-5 दिन last week में, when I went live to discuss how I derive these levels and every one of them. And Salman Mistry is here. He's following the time cycles. He's saying that I'm riding on a 15-minute cycle using that time cycle, and from the levels of 19,065. That's wow, fantastic, Salman. So I want to share across on this special day, on this pious day, that these things is possible only because of your wishes and blessings. और ये जो levels define करता हूं मैं, ये levels जो मैं आपको बता रहा हूं, ये levels दोस्तों और कुछ नहीं है. ये levels simple science है of time and simple science है of wave theory. These levels are defined using these concepts of time, wave theory and Gann technique. तो है ना चकाचौंध करने वाली बात. So चलिए आगे बढ़ते हैं. And also as I already shared, there are many of the people who are joining in. I won the Khiladi number 1 again this week, and thank you very much for that lovely wishes that you are putting it on the chat on Zoom platform. I'm not sure on YouTube क्योंकि मैं दोनों बाजू focus नहीं कर पा रहा हूँ. So do ensure you are joining me on the Zoom platform, तो थोड़ा सा focus easy होता है. अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर. आने वाले वीक में क्या लग रहा है, कहां पर हम जा सकते हैं, व्हाट आर द लेवल्स वी आर लुकिंग एट. एंड लेट मी गो ऑन द चार्ट. लेट मी ओपन अप दैट Gann स्क्वायर ऑफ 9 लेवल, और दिवाली में क्या हो सकता है. सो व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन वेरी वेरी क्लियरली फॉर दिवाली. व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट अभी का जो रैली है, फ्रॉम द वेव पर्सपेक्टिव, आई एम लुकिंग एट इट लाइक अ वेव बी. And I have been talking about I'm bullish until Muhurat trading. I'm asking how many of you have been riding with me? Okay, have been riding with me. How many of you are there? I can see Aradhya Tiwari saying your time is true, made 10,000 by trading the concepts of time from the last weekend on an intraday today. Awesome. तो उन्होंने weekend के सीखा, तो सोचिए अगर आप सीख के कर रहे तो बहुत बढ़िया बात है. So many of you are riding for full Shri Krishna, fantastic. Riding from 10 days, that is fantastic. Tony, you are not able to ride with me. That's not good. You should do that. But दोस्तों ये रिस्क वाला मार्केट है, एंड रिस्क है तो इश्क है. और साथ ही में एक चीज का ध्यान रखना है, भाव भगवान से. अगर कल नीचे आया तो यू हैव टू प्लेस अ स्टॉप लॉस. नाउ यहां से अभी करना क्या है,
Usually what my observation is, this is purely observation, this is not about technical right now. Market was on a downtrend and then it reversed up, which started wave B on the upside. This up move I've been expecting will continue until the Muhurat trading day. So I'm bullish for Sunday on the Muhurat trading day. And I think there is going to be a gap up opening. ये मेरा assumption है. On that gap up opening, market will then go sideways for some time and then some profit booking in the final hour. If we open gap down, अगर global markets weak है, ये सारी चीजें, तो we might open gap down. But I am of the view कि शायद हम ऊपर की ओर open होंगे and market will then continue to consolidate and then we might just move sideways on Muhurat trading day, which is on a Sunday. Now there is, for the coming week, we might start seeing some kind of a range bound movement, क्योंकि ये जो euphoria created था, ये दिवाली तक के लिए था. You know, coming week में lunar cycle भी है. Do you know that post Sunday it happens to be a lunar cycle? So very interestingly, guys, this lunar cycle which went away last time, Nifty actually started rallying again, which means something has changed. That's the concept of lunar. So let me go on the chart. Let me share across very, very clearly. And let me do share across the chart. And क्या लग रहा है? So मेरा chart मैं open कर लेता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए. Let us just look at the wave pattern and let us look at what is the wave pattern suggesting and what a level of 19,330. I have marked that level of 19,330 on the chart since ages and it has worked like magic. So ये रहा मेरा screen आप लोगों के लिए and you can see that okay, I can see Infinity on YouTube. He is saying that I am riding the time cycle using the prior candle technique. क्या बात है यार, आप लोग ये वेबिनार में सीख के इतना अच्छा ट्रेड कर लेते हो. बहुत बढ़िया बात है. जो हमने साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, it is simply fantastic. Okay, so now if you see this entire movement which is happening here on the chart, are you able to see the screen, every one of you? We can clearly see the overall trend for the market is up and ये 19,330 मैंने 3 दिन से मार्क कर रखा है, अभी का नहीं. ये लेवल basis of the time cycle I have marked it across since so long. So this is the level of Nifty. So if you are looking at this chart, what you can see is Nifty clear path as per Neo wave. This is Neo wave, okay, and we are moving in upward sloping channel. ये जो आप देख रहे हैं upward sloping channel है because the overall movement, ये this is the line which you are seeing here. This is an upward sloping channel is what we can see, this line and this line. So we are moving in an upward sloping channel. So Nifty clear path as per the Neo wave, and we can see that the hurdle of this channel, the intersection of the trend line, is very, very crucial. Okay, this is the intersection if you draw it correctly. These are crucial turning points. And यहाँ पर, so the hurdle on the upside is where? Can you tell me? Guys, can we be more interactive? तो मेरे लिए थोड़ा सा life easy हो जाएगा. What is the hurdle? 19,520 का level है. See, 19,520. Is it okay? तो कल अगर निफ्टी मेरा मॉर्निंग का ट्वीट 19,520 को लेके आएगा, 520 को, तो will you be able to digest कि क्यों derive किया? I mentioned it. Every time I do things, I do it in a scientific way. So what I am trying to say is Nifty clear path is what I am showing you as per Neo wave, and how to derive levels precisely that I tweet across, along with strategy for Muhurat trading day. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे clearly, let me just explain it to you. Is it okay if we go deep dive into Neo wave, guys? Or I'm just little confused whether to talk basics or to talk the advanced things, because I see a lot of mentees are here on Zoom with me, and I see a lot of people are there on YouTube who might not know the basics I'm talking about. So shall we do deep dive into Neo wave? Okay, advanced please.
चलिए ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो मूवमेंट है मार्केट का, that has been in a downtrend. In this downtrend, we completed the leg on the downside in the form of wave A. What we are witnessing now is a move on the upside in the form of wave B. After this, the top is formed at this level. This is also the level which I'll explain the exact level. I'll explain the exact level. यहाँ पर the top is formed on the level which is at 19,841. ठीक है, 19,850, 19,850. This is where the time cycle is going to be important. So 19,850 is my most important level. That is one information which I have. 19,850 के लेवल से यहाँ पर मुझे मिल गया 19,850. Now from here I can say that this was the low of cycle. I'm talking time and neo wave together. That's the power. This is the low of time cycle. If this is the low of time cycle, this is the top, and the cycle low was broken here. As per the logic of time, Nifty should not take out 19,850. That is the logic of time. But probability, अगर निकल गया तो निकल गया. Probability is in favor. It should not be taken out until the next 55-day cycle, which is going to be around 14th, 15th of December. That's the date. Now, that is what we know. तो ये लेवल कब तक नहीं निकलेगा? 14th December, which is the next 55-day cycle का date. Now, with that information, let us look at the wave theory. The wave theory suggests that this was a very sharp fall on the downside, possible wave A. This rise looks overlapping, but still it's a rise. I'm looking at this rise as wave B, which is going on as of now. Within this wave B, which is currently ongoing, we might be in the leg of wave diametric pattern. What is the diametric pattern? Diametric is a 7-legged correction with A, B, C, D. We have E, F, and G. This is A, B, C, D, E, F, and G. So what is the GPS of the market suggesting? The GPS of the market is suggesting that we might be right now in this phase. We might be right now in this phase. So what we can say that as per the GPS of the market, we are right now at the E. इसका मतलब यहाँ से move अभी खत्म नहीं हुआ. So possible है कि यहाँ से हम वापस से ऊपर जाए. We might complete E, we might have an F, and then we can have a G leg, which is then possibly going to complete the B wave. तो मतलब मूवी अभी बाकी है दोस्तों, कंप्लीट नहीं हुआ है. दैट इज द पॉसिबली द बी वेव दैट वी विल सी पोस्ट दिस कंप्लीशन. लेकिन 850 नहीं निकलना चाहिए. 850 निकला तो बात कुछ और हो जाएगी. एंड देन वी माइट स्टार्ट सीइंग द डाउनवर्ड मूव. नाउ विद दिस एज द एक्सपेक्टेशन, this is going to be the move for Diwali. This is what I'm expecting is Muhurat trading. ठीक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज गोइंग टू बी वीक आफ्टर मुहूर्त ट्रेडिंग, एंड दिस आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर दैट वीक what how we are going to span out and how we can behave, which can be somewhere around 20th. So this is my ideal trade setup that I am looking at the market, that I am looking at the overall movement. Am I making sense to you? Basis of the wave count, basis of the time cycle, because the time cycle is suggesting this, I am not looking at buying these I'm not looking at buying holding it for a longer time. मतलब ये मार्केट कॉल बायर्स के लिए शायद अभी नहीं होगा, ये मार्केट होगा पुट राइटर्स के लिए, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो है वो शायद इस तरीके से अभी हम देख सकते हैं. Am I making sense? Is it clear? What is the overall view for दिवाली? क्योंकि मैंने टाइटल ही रखा यार, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग. और कौन सा लेवल हमने देखा अभी?
19,000, मैं वो लेवल भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए जिससे ध्यान में रहे. द लेवल दैट आई हैव मेंशन्ड इज 19,520. वो लेवल कैसे डिराइव किया आपको पता है, साइंस पता है, मैंने आपको साइंस एप्लीकेशन बता दिया. ये एप्लीकेशन है, आप कर नहीं पाओगे खुद से अगर आपको वेव थियरी और टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट पता नहीं है. सो क्या एप्लीकेशन देखा हमने? विल निफ्टी टच 19,520 ऑन द मुहूर्त ट्रेडिंग डे? दैट इज द क्वेश्चन. आई थिंक यस. व्हाट डू यू थिंक? आई एम आस्किंग यू, व्हाट डू यू थिंक एज पर द लॉजिक? तो मतलब हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,330. सो द क्वेश्चन इज, विल निफ्टी टच 19,520 ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग डे on basis of Elliott wave and time cycles? So what I am going to do is I am going to be ensuring that I will keep a watch on the Muhurat trading day, how it has behaved. Once I keep a watch, if it is not touching that level despite of the Diwali euphoria, something is wrong. For me, that is also a very vital information. So something is wrong if that does not happen. Am I making sense? Is it clear? So ये हम देखेंगे कल के दिन में. एंड साथ ही में अगर हम यहाँ पर, दिस इज ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम, आई कैन ऑल्सो लुक एट द सेम कॉन्सेप्ट ऑन द क्लियर कट डेली टाइम फ्रेम. लेकिन डेली पे जाने के पहले let me now go back to the Gann square of 9 levels. Are you looking at the Gann levels? Are you excited? Are there people from the last master of cycles and the mentees here? Are you looking at the Gann levels? Are you excited to see how beautifully, how amazing these levels are working of time and price action? The Gann levels. So let me go on my Gann chart. And shall I share that across with all of you? What are the Gann levels and how it is looking like right now? So let me just clear off my screen and let me explain you these levels of Gann, the magic that it is creating. It's the magic. What I do is, यार दोस्तों, होता क्या है ना, जब मैं ये देखता हूं, I just keep wondering कि ये कैसे होता है. Okay, I just keep thinking ये कैसे possible है. That is what I keep wondering. ये लेवल्स देखो ना, इट्स लाइक एज आई सेड. सो बहुत सारे जन जो लेट ज्वाइन हुए दोस्तों, उनके लिए मैं वापस से बता रहा हूँ, आई वोन द खिलाड़ी नंबर 1 शो दिस वीक अगेन. दैट इज द इमेज. आई एम जस्ट शेयरिंग इट अक्रॉस फॉर पीपल हु मिस्ड सीइंग दैट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर द ब्लेसिंग्स एंड द विशेस. एंड यहाँ पर चलते वापस से गैन पे. सो गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अमेजिंग वे से ये levels काम करता है दोस्तों. यहाँ पर if you are looking at these levels, if you're looking at this overall low which is formed is exactly at 18,838 level. 18,838 का लो बनाया है निफ्टी ने, exactly at the point. Look at it. So Nifty formed low precisely at 18,838 with the hurdle now at with the hurdle नहीं बोल सकते, मैग्नेट बोल सकते, क्योंकि हर्डल मतलब उसके ऊपर नहीं जा रहा. मैग्नेट मतलब ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है. with the magnet now at 19,391. These are pure Gann levels. And what is next? That's the question. So Gann levels के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी का बहुत बड़ा जो important move है will be dependent on this level. यहां पर अगर निफ्टी ये वाला लेवल जो है, दिस इज द लेवल, इफ ये वाला लेवल ब्रेक करता है, जो लग रहा है कर देगा, एंड इट सस्टेन्स फॉर 2 more days, it has to sustain that, which means that 19,520 के ऊपर sustain for 2 days, then I will start thinking of 19,952. This is purely on Gann, not on time cycle. But my time cycle logic says that 850 nahi nikalna. So I will be bullish for 19,700. To be honest, 19,700, 850 के आसपास से
रिवर्स होगा मार्केट। तो मेरा व्यू है बुलिश शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मेरा जो व्यू है वो कंफर्म होगा प्राइस एक्शन के साथ। सो क्यों ऐसा? बिकॉज दोस्तों भाव भगवान छे, समय बलवान छे, एंड ये चीजों का कॉन्सेप्ट पे अगर आप समझ रहे हो और ये चीजों को आप समझ रहे हो तो यू नो हाउ इट ब्रिलियंटली वर्क्स एंड द लेवल वर्क्स लाइक मैजिक। सो आई कीप लुकिंग एट दैट। मैं एक और चीज देख रहा था, मैं कुछ बोलने वाला था आप लोगों को और भी साथ में, वही चीज मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। सो वेरी वेरी क्लियरली, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जस्ट वन मोमेंट। यहाँ पर मैं जो बोलने वाला हूँ आप लोगों को, एक चीज है, आई एम गोइंग टू टेक अ पोल, एंड पोल में पार्टिसिपेट आप लोग वही कर पाओगे जो यहाँ पर जूम पे है मेरे साथ में। सो एक पोल मैं लेना चाहता हूँ। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू, ओके, मैं जस्ट पोल, मैंने पोल बनाया ही नहीं, शायद मैं पोल बना देता हूँ, चलेगा आप लोगों को? आर यू पेशेंट इनफ? बिकॉज उनके लिए मेरे पास कुछ है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी basic with me? I just want to, how many of you तो नहीं होगा, do you want to आएगा? Okay, do you want to learn from very basic with me? I'm making a poll right now, and you want to do that? Okay, चलिए एक चीज करता हूं मैं। Do you want to learn the very basic with me? Are you ready to do that? With basic techniques के बारे में हम बात करेंगे। I'm taking a very quick poll. Basic, not about Elliott wave, not about Neo wave, not about anything else. Right from the scratch, how do we plot a chart? Right from the scratch, how do we look at it in the correct way? Right from the scratch, how do we go about starting to trade? Do you want to be with me right from the very basic? क्योंकि मैं इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि जहां तक मुझे पता था आप सारे लोगों को बेसिक्स आता है, तो मैंने कोशिश नहीं की आप लोगों को सिखाने के लिए। But if there are so many of you, I'm taking this poll, guys. Are you there on YouTube? Do you want to be participating in this poll with me with so many of them? If yes, then ये रहा Zoom का लिंक, Zoom पे आइए, जल्दी से पार्टिसिपेट करिए। एलियट वेव का बेसिक नहीं, प्योर प्राइस एक्शन, trend lines intersection, looking at that science of trading in the simplest possible way. How many of you are wanting to learn that? And people on YouTube, do put across on the chat if as a yes, if you want to do that, so that I know. And do not forget to like, share, subscribe the button. Okay, so there are so many of you who want to learn from the very very basic of टेक्निकल एनालिसिस राइट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, तो एक काम करते दोस्तों, आप लोगों के लिए कल मैं सुबह 11 बजे लाइव आऊंगा। ठीक है, सुबह 11 बजे कल मैं लाइव आऊंगा, एक्सक्लूसिव, ओनली ऑन जूम प्लेटफॉर्म। एंड इफ आई गो फुल, आई विल नॉट बी एबल टू टेक यू, एंड दिस विल नॉट बी टेलीकास्टेड anywhere else. Are you ready to come 15 minutes prior on a Zoom platform tomorrow morning, which is going to be at 11? लेकिन कल दिवाली का दिन है, so I'm not sure if you will be, if you want to be. So इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप मिस कर जाओगे। एक मास्टर क्लास है कैंडल स्टिक्स एंड टाइम साइकिल पे, ये शायद आपने अटेंड की भी हो गई पहले, लेकिन ये मास्टर क्लास के बाद में आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग very very important, which will help you to start from the basic, from the very beginning. From the very beginning I'm going to share across with all of you कहां से आप मेरे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हो। If that is the case, here is the link for every single one of you. But as I said, this will happen exclusively only and only on Zoom. It will not be telecasted again.
because tomorrow I'm giving my time on a festival day to you all, expecting that you learn. और अगर मैं दे रहा हूँ टाइम तो आई नीड्स पीपल हु आर वेरी मच सिंसियर टू लर्न अबाउट इट, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी बैंक, कल बात करेंगे निफ्टी बैंक पे, वेयर आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो डू इंश्योर, ओके, आई एम एंडिंग द पोल बाय द वे राइट नाउ. तो कल ज्वाइन करना ना भूले, ये लिंक आपके साथ में शेयर कर दिए मैंने वहां पर. एंड शुभम अग्रवाली से सर नेक्स्ट वीक करो, वाइफ मुझे बहुत डांटेगी. शुभम, मैं भी भाग के ऑफिस आके ये करने वाला हूँ, क्योंकि घर पे अगर मैंने किया तो मैं कर ही ना पाऊंगा. तो आप वाइफ और बच्चे दोनों ही डांटेंगे मुझे, इसलिए मैं ऑफिस आने वाला हूँ ये करने के लिए. तो आप भी ऐसा ही कुछ जुगाड़ निकालो यार, गाड़ी में बैठ जाओ, फोन ऑन करो और देख लो जो मैं करने वाला हूँ कल. और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाद में आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर अक्रॉस समथिंग इंटरेस्टिंग. साथ ही में दोस्तों, वी हैव अवर मेंटरशिप प्रोग्राम विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of November, and it's going to be simply amazing. So 29th of November से mentorship program start हो रहा है, and in this mentorship program you will learn everything that I know as a science, how I do that, how I derive those levels, all of those things. And Nirav Prajapati is saying, maybe your wife is live now and listening this. Can I share a secret with you? Is it okay to share a secret with you? The secret is she no longer is interested in seeing me live. She tells me, I'm already bored seeing you in reality. I don't want to see you live again on television. मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ यार, टीवी चालू करके जरा देख तो लो कि सीएनबीसी खिलाड़ी नंबर 1 वापस से मैं जीत गया हूँ. तो बच्चे क्या जवाब देते, पापा कोई नई चीज बताओ, ये देख के क्या करें हम. So that's how they are. So I was attending an event of Dhoni about a month back, and very interesting what he was talking about. And he simply said that ऐसा नहीं समझना कि मेरी वाली अलग है. मेरा एक कोना है घर में, वहां पर मैं बैठता हूँ, और मेरी वाली आप लोगों की वाली से कोई भी अलग नहीं है. ऐसा वो धोनी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा यार. मेरी वाली भी वैसी ही है, इसलिए मैं सुबह 11 बजे भाग के ऑफिस आता हूँ ये कंडक्ट करने के लिए. तो बात तो वही है. सो ये चीजें हैं दोस्तों. चलिए, आज थोड़ा सा माहौल थोड़ा जॉयफुल हो गया मार्केट्स के साथ में. और साथ ही में दोस्तों, माय कलीग विल शेयर अक्रॉस द लिंक ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम. इफ यू वांट टू लर्न विथ मी इन ट्रू सेंस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी इन ट्रू सेंस विथ एवरीथिंग दैट आई नो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, जैसे खिलाड़ी नंबर 1 जीतने के लिए मैंने कौन से स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए, क्या मेरा स्कैनर है, कैसे आप वो कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग साथ में करेंगे. उसके साथ में हम देखेंगे ये जो वेव थियरी पे लेवल्स निकालते हो यार. आज का ट्विटर पे लेवल था 19,330, 19,450. निफ्टी का लो है 19,229, नीचे 1 पॉइंट गया, ऊपर का है 19,451, ऊपर 1 पॉइंट गया. यार मजाक थोड़ी है ये लेवल्स निकालना. एंड this is going to be simply superb. So you ensure that you are learning this science in totality with me. Now the question is, how do you have to learn? So I'm going to also share across. You can be a part of this mentorship program, and you can simply register on the link which is shared across. I'll share that link again with you all, and you can simply be with me, and this will change your life. That's what I can say. That's what the mentees say, that their life has changed. And for the mentees also, there is going to be a surprise for all the mentorship participants. My plan for the next 1 month is to come live every week, exclusively for you all, not every day, every week, and discuss the basics of the methods with you. Are you okay? All the mentees, this special offer, I do it for mentees. So mentees ke saath mein I'm going to do that. That's the plan. The only thing is I need to schedule out a few things. So right from the basic, but then I'll not be answering your new wave questions. I'll not answer about anything advanced. I'm going to talk about the crux of price action. I'm going to talk about the crux of how do you start right from the scratch. And this will be the repeat
of all the mentorship sessions that you might have done. So that's the luxury of being a mentee. So guys, I'm taking a very quick poll right now. I'm taking a very quick poll for all of you who are interested to be a part of this mentorship batch that we are doing. I'm taking this poll and it's right now with you all if you want to be a part of this mentorship batch. And अरे यार, mentorship on timing the market November 2023 1, हम वो एरा में नहीं है दोस्तों, हम 20,231 पे नहीं है, हम 2023 पे है। ये मेरी टीम ने शायद 1 मिस्टेक से जोड़ दिया। धनतेरस से तो एक नंबर जोड़ने में क्या जाता है यार, धन की वर्षा होगी अगर एक नंबर जोड़ दिया। सो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग विथ यू ऑल। सो चलिए इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मेरी टीम बोल रही है रियली सॉरी, उसकी जरूरत नहीं है यार। 20,231 नंबर अच्छा है, 20,231 शायद मार्केट छू जाए, किसे पता। निफ्टी का लेवल भी 20,231 आ जाए, किसे पता। अभी तो हम फिलहाल 19,420 के आंकड़े पे खड़े, बट जल्दी शायद वहां आएंगे, दिसंबर में आएंगे वो लेवल। दैट लेवल इज इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन वॉच। नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग happens for a reason, and that's the level. So I'll ask my colleague to keep the watch on 2023-1. So 20231. Okay, that's the level. But दोस्तों आज मजा मस्ती बहुत हो गई, आज के लिए इतना ही काफी है, नहीं तो मैं ऐसे बोलते रहूंगा। कल मिलेंगे 11 बजे, लेकिन एक्सक्लूसिव जूम पे मिलेंगे। आप लोग को आना होगा अगर आपको सीखना है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। कल के वेबिनार के बाद में मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, दैट कैन गिव यू दैट पुश ऑन हाउ टू गो अबाउट इट from starting from the scratch. And if you are a mentee, you don't really have to worry about it. I will get you there. I will take you back to the days of mentorship program. So that's what I'm saying. Be a part of this wonderful journey with me on the mentorship. That's a life transformation. जो मैं कर रहा हूँ आप भी कर सकते हो, and trust me, it is very much possible. It's a Dhanteras day. I will not lie to you. I will say that it is working for me. I am using the concepts of time. It will work for you. You only have to be disciplined. You have to give your time to me, and I will make it happen. You have to have trust. If you have the trust, we will get that. But if you keep jumping here and there, it will not happen. If you want to know the levels that I derived again today, if you want to know how I have won more than 20 times on Khiladi number 1, including this week, then be a part of this mentorship program. That's it from my side, guys. Thank you very much for joining in. Love talking to you all. आज कोई प्लान नहीं था मेरा, क्योंकि सुबह मंदिर गए थे, उसके बाद में मैं कहां पर तो था, वहां से अरेंज किया लाइव CNBC पे जाना, और फिर मैं वहां से भाग गया, और मैंने फिर बोला यार चलो फ्राइडे एट 4 पीपल विल मिस, तो उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते आज के दिन, एंड दैट्स व्हाई आई डिड इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. Have a wonderful time, become a wonderful trader, and it is my wish and my blessing on this wonderful day that you make it big, because for me the success is, if you do it big, it's a success for me. What else a mentor needs then the success of his Gurukul participants. Thank you very much, and do ensure to be there at 11 tomorrow morning. Link will be on the Zoom. You will find it on the website and you can register from there. Thank you.